ड्रग माफिया के पास से 45 करोड़ की हेरोइन जब्त, 4 गैर स्थानीय समेत 10 लोग गिरफ्तार। बारामूला में संयुक्त बलों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 45 करोड़ की हेरोइन जब्त की और उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती शहर उरी बारामूला में पंजाब से 4 गैर स्थानीय लोगों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के पास से एक ट्रक, 2 कार और एक स्कूटी भी बरामद की गई। उनके पास से ड्रग के अलावा नकदी, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। 53वीं बटालियन स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ के जवानों सहित संयुक्त बलों द्वारा गिरफ्तारी की गई। एसएसपी बारामूला रईस अहमद ने कहा कि वे एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि 10 चीनी ग्रेनेड, 4 चीनी पिस्तौल, 4 पिस्टल मैगनीज, 20 पिस्टल राउंड, हेरोइन 4.9 किलोग्राम, बाजार में शुद्ध प्रतिबंधित मूल्य 45 करोड़ रुपए, 21.50 लाख नगद, 10-10 लाख रुपए के 2 चेक बरामद किए गए। उनके पास से एक आयशर कैंटर ट्रक, स्कूटी और एक मारुति स्विफ्ट भी जब्त की गई। एसएसपी ने कहा कि टीमों को कश्मीर के बाहर भेज दिया गया और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। Information, we had laid specific motor vehicle checkpoints, and we were successful in apprehending certain people, and we made some recoveries from them. In furtherance to the investigation from and interrogation from these people, we were successful in busting a big narco terror module, which was operating from different places in fact in the UT, as well as some part of it even outside the UT. And on the basis of investigation so far, we have been able to arrest in all 10 people, and we have been successful in seizing a total quantity of almost 5.5 kgs of heroin packed in 11 packets. We have also been successful in seizing 10 grenades from their possession. We have also been successful in seizing 4 number of pistols with 4 magazines and 20 rounds from this possession. Besides this, some vehicles, including a small LP truck, Verna, a scooty and other such vehicles have been seized in the case. We have also in fact made some arrests. Our teams are currently in Jammu, and they have made some arrests with the assistance of Jammu police also. This all was a joint operation with the army and the CRPF. In this, we were also successful in getting some cash, which in all amounts to around 21.5 lakhs. There is also a couple of checks amounting in all up to 1 lakh. And the total worth of the contraband that has been seized, the drugs that have been seized, is nearing to about 25 to 30 crores in the black market. So in all, this is a big catch for us, and we are hoping that further leads will come out, and we will be able to get a few more arrests in the case.